A very warm welcome to the class. I really hope that you guys are doing well. All right, so let's continue with our discussion. So कल जो है हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे थे, हमने प्रोसेस पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था एंड आई थिंक मैंने वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ वो भी आपके साथ डिस्कस किया. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द रिफॉर्म्स व्हिच वुड हैव हैपेंड. ठीक है, चलिए. सॉरी. All right. So, what are we going to see now? So, we're going to see the various protests. So, हम क्या discuss कर रहे थे? We were discussing the impact of industrialization. ठीक है? So, impact में हमें क्या क्या discuss करना था? We discussed the changed lives of the people. ठीक है? Fine. What else did we discuss? हमने change lives discuss किया. Then हमने women and children जो है वो डिस्कस किया. एंड लास्टली व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, उसके बाद हमें अब डिस्कस करना है प्रोटेस्ट मूवमेंट. और इसके अलावा लास्टली हम क्या डिस्कस करेंगे, जो रिफॉर्म्स आए, है ना. सो दिस इज व्हाट आवर मेन एजेंडा इज हियर. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पहले हम क्या डिस्कस करने वाले, नाउ वी विल मूव ऑन टू डिस्कस द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स. तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था दैट औरतों और बच्चों की जो कंडीशन थी, women and children, the condition of women and children were horrendous, right? I mean, it was really bad, बहुत ज़्यादा खराब थी, to such an extent that protest was something which is going to happen. Protest एक ऐसी चीज़ है जो होनी ही है, it is bound to happen. And that is exactly what happened here as well. So we have a number of protest movements with number of uh, उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत नंबर ऑफ डिमांड्स. दैट इज व्हाट वी गोइंग टू टेक अ लुक एट एज टू व्हाट दीस प्रोटेस्ट मूवमेंट्स वर एंड व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. नाउ, so you all know that England had been at war with France. So England had been at war with France from 1792 to 1815. आप देख सकते हो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है. From 92 to 15, it's a huge time period to be at a war with someone, because war means that there's going to be a lot of economic impacts on it, isn't it? What kind of economic impacts will you see? So there would be, trade जो है वो ठप हो जाएगा. There would be a lot of unemployment, wages will come down, etc. Right? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. Fine. And most importantly, the prices of things are going to rise up. जो बेसिक चीजें हैं उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी. That is exactly what happened in England. That is exactly what happened in France as well. Fine. So in that situation, what do you expect the government to do? In this situation, you expect the government to be helpful to the people, कि वो उनकी मदद करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, but नहीं. What did the government do? The English government passed a Combination Act in 1795. ठीक है? So, what did they do? 1795, they passed what is known as your Combination Act. ठीक है? क्या है ये कॉम्बिनेशन एक्ट? व्हाट इज दिस अबाउट? व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन एक्ट? ठीक है, सो बेसिकली इट स्टेटेड that people will not be able to incite or encourage other people on the basis of hate speech, demonstrations, etc. ठीक है, तो बेसिकली आप hate incite नहीं कर सकते, incite नहीं कर सकते हैं on the basis, so prohibited what? सो आप जो है वो हेट इंसाइट नहीं कर सकते हैं थ्रू स्पीचेस और राइटिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो आप इस बेसिस पे यू कैन नॉट इंसाइट एनी काइंड ऑफ हेट. फाइन. ऑल्सो व्हाट दे सेड इज नो गैदरिंग ऑफ पीपल. ठीक है, मतलब लोग एक जगह जो है वो गैदर नहीं कर सकते हैं
नो गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ मोर देन 50, तो 50 से ज्यादा लोग एक जगह गैदर नहीं कर सकते। तो गाइस आप एक चीज तो यहाँ पे समझ जाओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पीपल, उनसे उनके जो बुनियादी हक हैं कि आप एटलीस्ट यू कैन कंप्लेन अबाउट इट, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, वो भी उनसे छीन लिया। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो अलाउड ही नहीं है, दिस इज समथिंग यू कांट डू। ऑलराइट, सो isn't that saying something? Isn't that telling us about the government, that the government is trying to repress these people, right? Okay, अब देखिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइम पे इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर्स कौन है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट आर दीज लैंड ओनर्स, दीज इंडस्ट्री ओनर्स, फाइन। सो वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और वो नहीं चाहते हैं क्या, they do not want to give any kind of rights to whom, they do not want to give any kind of rights to the कॉमन पीपल। वो नहीं चाहते कि उनको वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन लोगों को वोटिंग राइट्स दे दी तो देन इट इज गोइंग टू बैक फायर एट अस ओनली, कि हमारे ऊपर ही सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो वो उनको वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पार्लियामेंट, इट सपोर्टेड कॉर्न लॉस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्न लॉस? चलो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉर्न लॉस होता क्या है। See guys, because Britain is in such a situation, the prices of essential goods are rising. जो नॉर्मल चीजें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, yes the prices of essential goods have risen a lot. Okay fine, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। So what is happening? Suppose this is just an example which I am giving. ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है that suppose price of 1 kg of corn is 80 पाउंड्स। ठीक है, लंदन में या फिर इंग्लैंड में अभी ये दाम है बिकॉज प्राइसेस जो है वो बहुत हाई। ठीक है, सो यू नो व्हाट इंग्लैंड कुड डू, इंग्लैंड कुड एक्चुअली इंपोर्ट चीपर क्रॉप्स। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो चीपर क्रॉप्स इंपोर्ट कर सकता है, फाइन। सो द प्राइसेस, द crops which they import, all right, so the price of 1 kg of imported corn is suppose 40 pounds। ठीक है, all right, so which is better? इससे तो बेटर क्या है, क्या करना बेटर है, ये करना बेटर है या ये करना बेटर है, किसमें खरीदना बेटर है? Obviously, buying at this price, buying at 40 pounds is better than spending 80 pounds, isn't it? 80 pound spend करने से अच्छा है भाई कि हम 40 pounds में सामान खरीद लें, and that too this is for the survival of the people. So yes, the government was sort of ready to import things, और लोग भी उनको कह रहे थे कि हाँ भाई इंपोर्ट कीजिए बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, दे वेरी एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट अफोर्ड देम। So you know what they did, what the parliament did in this situation? The parliament said that no, we will not be importing the cheaper corn. We will wait. We will wait for the economy of England to become better. ठीक है भाई, okay, you can wait for the economy of England to become better, but that is for you. You can survive in this economy because you are not living hand to mouth. You have surplus, you have money, you have savings. But what about those people जो wages पे रहते हैं, जो daily wages पे रहते हैं, जिनकी कोई earnings नहीं है, जिनकी कोई savings नहीं है? How are they supposed to last 2-3 years in which the economy recovers? Okay, so what they said is कि no, we will not import this. We will wait for the prices to come down. Okay, we will wait for the economy to get better. Now what if the economy takes 2 years to get better? What are we supposed to do then? हम तब क्या करेंगे? How are people going to survive these 2 years? But people, the members of the parliament was not concerned, and they have supported the corn laws. उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो import करेंगे ही। ठीक है, fine.
So from 1790s onwards, bread riots and food riots have become very, very common. Okay. So bread and food riots. तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, ठीक है। मतलब लोग लिटरली जो ब्रेड प्राइसेस, तो जो ब्रेड शॉप्स होते थे, उनको जाते थे, उनको लूटते थे और फिर सामान को बेचते थे एक एक नॉर्मल दाम पे, विच इज अफोर्डेबल बाय एवरीवन, ठीक है। ऑलराइट, नाउ 1790s the weavers began demanding a minimum wage, okay। फिर क्या हुआ, और अब क्या हुआ 1790s में? Then we have in 1790s, we have weavers so weavers ने क्या डिमांड की? Weavers demanded minimum wage, okay। So what have they done? They're saying कि हमें भाई minimum wage चाहिए। Okay भाई, fine। And what do you think the parliament is going to do? Parliament refused। पार्लियामेंट ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपको एक मिनिमम वेज जो है वो हम फिक्स कर दें, ये तो ओनर्स के ऊपर है, उनकी जितनी मर्जी होगी वो उतना देंगे आपको, ठीक है, फाइन। So you know what happened? They went on a strike, all right, and but they were dispersed by force. Okay, so ये लोगों ने क्या किया? They went on a strike. These people went on a strike, but they were dispersed using all sorts of force. All right. Now, lot of people in many places, lot of these weavers, etc., they resisted against the entry of machines. Why? Because they felt that if machines come into our life, then what is going to happen? If machines come in, then there is a huge chance that we are going to lose our jobs. They are already fighting for their survival. And one more thing happened: if machines come in, then they will all the more have to fight for their survival. And that is something they don't want. वो चीज नहीं चाहते हैं वो, ठीक है। So there was a lot of resistance against machines, particularly in the knitting industry in Nottingham. All right, so there was a lot of resistance against machines. All right, कहाँ पे resistance हुआ था? This was in Nottingham, ठीक है, which is obviously your knitting industry, ठीक है। Then in Yorkshire also, fine। Nottingham, then in Yorkshire, हाँ। So these are the places where machines have entered. तो अब यहाँ पे ना जनरली बिकॉज निटिंग इंडस्ट्री है, सो नॉर्मली जो आपने देखा होगा कि हम भेड़ के जो बाल छीलते हैं, ठीक है। सो भेड़ के बाल छीलते हैं ना, उसका जो पूरा फर होता है वो छीलते हैं, राइट। दैट इज हाउ वुल इज मेड, ओके। सो जब हम वो करते हैं, so that is done by human beings, normally उसको human beings करते हैं। but then certain machines were introduced जो कि shearing process, जो बाल छीलने वाला process है, उसको easy कर देता, fine। but the people were so scared that what if machines replace us, we're going to lose our livelihood। and you know what they did? They destroyed the machines। इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने machines जो हैं उनको destroy कर दिया, because उनको लगा कि what if their job is taken away। so you know what happened? Those people who destroyed the machines, okay, so what have they done? They destroyed the machines। उन्होंने machines जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद जिसको हम कहते हैं ना वो कर दिया, fine। Now out of them, so अब इन लोगों के लिए punishment क्या है? So 9 of them were hanged and 450 of the people were convicted, okay। You can imagine the reactions here,
right? 9 were hanged, and 450 were कॉन्विक्टेड. ठीक है, क्या किया गया, उनको कॉन्विक्ट किया गया, उनको लिटरली उनको जेल हो गई इस बात के लिए, जस्ट बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर देयर राइट्स. ठीक है, ऑलराइट. नाउ देयर वाज आल्सो another separate protest movement which was known as the Ludism movement. Okay, so we have one more movement. So there's something called Ludism. All right, सब ये लूडिज्म मूवमेंट जो है वो किसने लीड किया था? सो दिस वाज लेड बाय द लीडर इज पर्सन कॉल्ड जनरल Ned Ludd. Okay. So he was the person who was the leader. And you know, these people were not about just mindless protest कि हाँ ठीक है हम मशीन्स तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. नहीं, दे हैव थॉट आउट. उन्होंने बड़ा थॉट आउट तरीके से अपनी चीज़ों जो है, अपनी डिमांड्स जो है वो प्रेजेंट की थी. सो व्हाट वर देयर डिमांड्स? ओके, सो डिमांडेड मिनिमम वेज. मिनिमम वेज डिमांड किया, कंट्रोल ओवर वर्क ऑफ women and children. ठीक है, कि औरतों और बच्चों से जो काम कराया जा रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए. He also asked for what? He also said that those people, what this was one of the demands, that those people who have lost their jobs because of machines should be provided with jobs. ठीक है, सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस वाज देयर डिमांड कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि आपने हमें जॉब्स हटाया जस्ट बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ मशीन्स, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप हमें जॉब्स प्रोवाइड करें. ठीक है, फाइन. एंड दे ऑल्सो आस्क्ड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ताकि अपने डिमांड्स जो हैं वो बेहतर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पुट फोर्थ कर सके. ठीक है, सो ऑलराइट. उन्होंने कहा कि भाई हमें राइट मिलना चाहिए ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का. बट ऑब्वियसली इट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दे आर गोइंग टू लिसन टू एनीवन. नाउ लास्ट के जो कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज, सो अगस्त 1819, 80,000 पीपल. ओके, सो क्या हुआ है नाउ? सो 80,000 people, all right, what have they done? They have gathered peacefully in St. Peter's Field in Manchester, all right. ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? व्हाट आर देयर डिमांड्स, राइट? सो दे आर डिमांडिंग फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, public meeting, freedom of press. Okay, so they're asking for democratic rights. What is the democratic right over here? Right, so democratic rights यहाँ पे क्या है? The democratic rights is they ask for political organization, public meetings, कि हमें क्या फ्रीडम होनी चाहिए, कि हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की फ्रीडम होनी चाहिए. वी शुड हैव द फ्रीडम टू कंडक्ट पब्लिक मीटिंग्स, ऑलराइट. एंड व्हाट एल्स आर दे आस्किंग फॉर? एंड दे आल्सो आस्किंग फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि हमें आज़ादी होनी चाहिए
कि हम प्रेस में कुछ भी प्रिंट कर सके, ठीक है, even if it goes against the government, right? How do you think the government would have reacted? So the movement was suppressed by a in the Peterloo massacre. So आपको यहाँ पे थोड़ा सा it must be ringing some bell here. Something similar has happened in the Jallianwala Bagh itself. Remember, people had gathered peacefully, they were protesting, they were asking for certain rights. कुछ लोग तो सिर्फ बैसाखी मनाने आए थे and the government opened fire on them. So जब उन्होंने अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा तो हमारी तो कोई बिसात है ही नहीं. Alright, so anyway, this resulted in what is known as the Peterloo massacre. Right? So, and ना सिर्फ massacre नहीं था, government had passed what is known as the Combination Act. ठीक है? So government ने पास क्या किया? Government ने पास किया 6 acts which denied them any kind of political rights. Okay? Government passed what? Denying any political rights. इन्होंने क्या कहा कि हम आपको क्या नहीं दे रहे हैं, हम आपको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो नहीं देंगे. सो सिर्फ मैसेकर कम नहीं था गाइस, मैसेकर तो हुआ ही हुआ, प्लस उनसे 6 एक्ट्स भी पास करवा लिया कि अब हम आपको कोई राइट्स ही नहीं दे सकते. ठीक है. So these are the various protest movements which have taken place. And finally we have some reforms also. Guys, reforms में बहुत सारे acts हैं, तो मैं आपको acts लिखवा दे रही हूँ. There's nothing a lot to explain here. कि acts क्या थे? Simple acts हैं, so just take it down. It will be easy for you. All right? चलो. Okay. So reforms में हम देख लेते हैं कि क्या हुआ. So reforms में बहुत सारे acts पास किए गए हैं, and each act is for something. Let's take a look at that. All right. So 1819. प्रोहिबिटिंग मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे 9 साल से कम हैं उनको आप इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो. ठीक है. प्रोहिबिटिंग. ओके. ये कब था? दिस वाज इन 1819. फाइन. ओके. एंड they also reduced the work hour of children. So जो बच्चे हैं 9 से 16 साल के बीच में, they are going to work for how many? For 12 hours a day. ये भी ज्यादा ही है, but ठीक है, at least something.
So guys, ये सब जो भी है ये सारे एक्ट्स हैं, ठीक है. Now I'm not explaining them because ये काफी simple है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इसमें hard and fast नहीं है. There's nothing, these are just facts basically. We don't have a lot to explain here, ठीक है. So I would want you to take it down now. And guys, मैं एक चीज़ बस आपको point out कर रही हूँ that I am assuming कि आप ये चीज़ें already अपनी जो junior classes हैं उसमें पढ़ चुके हो, तो इसलिए आपको ये चीज़ें clear हैं, ठीक है. बट जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है और आपको मेरे से एक्सप्लेनेशन चाहिए या ऐसा कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो. यू कैन जॉइन मी इन द डाउट क्लियरिंग सेशंस और आप मुझे बता देना कि मैम हमें ये चीज़ें नहीं पता है और हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए इनके. सो आई बी मोर देन हैप्पी टू गिव इट टू यू. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अभी आपने ये चीज़ें जो है वो कर रखी हैं, इसीलिए मैं अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ. बट इफ यू नीड इट प्लीज डू लेट मी नो. आई बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो खत्म होता है. फाइन. सो वी हैव डन विद द इम्पैक्ट एज वेल एंड द प्रोटेस्ट मूवमेंट एज वेल. ओके. सो आई एम गिविंग यू 5 to 10 minutes टू टेक दिस डाउन. इसको आप टेक डाउन कर लीजिए, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा आपके नोट्स हो जाएंगे ये. फाइन. और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है which is colonialism and rise of nation states, that is what we will start with. Okay, so just take your time, take 10 minutes, take this down, and then we'll move ahead. Okay. All right, guys. I'm sure we're done with this. Okay. So now we will move on to the very next chapter here, and now we will be focusing on colonialism and the rise of nation states. ठीक है. So अब हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे. So basically, after industrial revolution, we have all of those industrial revolution के बाद हमने सारे जितने भी revolutions किए थे, फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, ये सारे आएंगे, ठीक है. And I think one of the direct impacts of industrial revolution was the creation of colonies, ठीक है. So हम वही करने जा रहे हैं, that is our next chapter. Okay. So colonialism and nation states. So rise of nation states जो हैं वो हम आई थिंक कल वाली क्लास में खत्म करेंगे, बट अभी हम किस पे फोकस करेंगे? अभी हम कोलोनियलिज्म पे फोकस करेंगे, ठीक है. ऑलराइट. नाउ so you know what, it is important to understand the definition of colonialism. और कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच में अगर हम डिफरेंस कर सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज कोलोनियलिज्म, ठीक है.
what is this idea of colonialism? ठीक है? Okay. So what do you think is the definition for colonialism? See, it basically involves a practice of domination, all right, by a foreign country, fine, by a foreign country to the natives. So it involves what? It involves a practice of domination of the natives of a land, okay. So a practice practice of domination of natives of a land, ठीक है, by a foreign country एंड बट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कोलोनियलिज्म में, दैट इज दैट even though these foreigners live as permanent settlers there, ठीक है, ये रहते हैं permanent settlers की तरह, that yes we have become a part of this nation, but they still owe their allegiance where to their mother country, all right. So they live as what? They do live as permanent settlers कि हाँ हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है. I'll explain this through an example, don't worry. Okay. All right. So देखो guys, this is what colonialism is. That when you create what? When you basically create a practice of domination, जब आप किसी दूसरे country को natives को dominate करने की कोशिश करते हो, ठीक है? When you dominate them, and this is done by a foreign country, fine? Now very important is this, that they live as permanent settlers, ठीक है? वो रहते हैं as permanent settlers in your land, all right? So they are going to live as permanent settlers. Like the Britishers came here and they had no idea or they had no want of leaving our nation. वो कभी छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे यहाँ से, है ना? So they had come here because they were living as permanent members कि हम तो यहीं रहेंगे, अभी हमारा देश है. लेकिन they do live as permanent members, but they do not consider themselves as members of that nation. But they always owe their allegiance to what? They always owe their allegiance to the mother country. ठीक है? हाँ. So मतलब वो ये जरूर करेंगे, रहेंगे एज परमानेंट सेटलर्स, फाइन, कि अब हमें यहां से कहीं नहीं जाना है, बट they will owe their allegiance to whom? They will owe all of their allegiance to the mother country. ठीक है, fine. Now, most of the time, the colonies or colonialism as a practice is done for what? Most of the time, colonialism as a practice is done for economic exploitation. ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज. ठीक है, सो जनरली किस लिए किया जाता है? ताकि कॉलोनीज जो हैं उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा सके. एंड यू ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ दीज कॉलोनीज व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सच अ वे, और उन्हीं जगह को चुना जाता है टू बी एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज व्हिच आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज, जिनकी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होती हैं, and they could be exploited economically. So this is what colonialism means, guys. ठीक है, और अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें between colonialism and imperialism, alright, so colonialism में हम क्या करते हैं? So colonialism, you basically subjugate the natives for what? You subjugate the natives for your economic needs, fine. आप उनको सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो अपनी मदर कंट्री के इकोनॉमिक नीड्स के लिए उनको सब्जुगेट करते हो, ठीक है, फाइन.
But in imperialism, the subjugation might not be economic. It can be in a variety of ways. It can be through sovereignty or it can be through indirect mechanism. ठीक है, डिफरेंट तरीके से आपको सब्जुगेट किया जा सकता है, पर जनरली कोलोनियलिज्म में क्या होता है, colonialism में the subjugation is on the basis of what? The subjugation is on the basis of economy. इकोनॉमी के बेसिस पे सब्जुगेट किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है हमारा इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म में क्या किया जाता है, इन इंपीरियलिज्म द सब्जुगेशन कैन बी थ्रू सॉवरेनिटी, इन द सेंस कि हम एक देश की सॉवरेनिटी ही छीन लें, वी स्टार्ट रूलिंग ओवर देम, राइट, or it can be through various indirect measures. Now, generally here in imperialism, it does not involve a mother country, right? वो mother country involved नहीं होता है. So, for example, if I have taken over a country, that country will also become part of my country. ठीक है? वो मेरे ही देश का हिस्सा बन जाएगा. So, this is what is known as your imperialism और ये basic difference है यहाँ पे. So, imperialism basically involves ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हर तरीके का कंट्रोल होगा, जैसे कि आई थिंक द ब्रिटिशर्स डिड कम एज कॉलोनिस्ट, बट इवेंचुअली वो लोग क्या बन गए थे, इवेंचुअली दे हैड बिकम इंपीरियलिस्ट एज वेल, बिकॉज आए तो वो थे वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए, बट धीरे धीरे दे हैव एस्टैब्लिश्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रोल ओवर इंडिया, है ना, हर तरीके का कंट्रोल जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान में आके एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। All right. Okay. So ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब हम क्या देखेंगे, अब हम पहले देखेंगे कॉजेस क्या हैं हमारे कोलोनियलिज्म के, ठीक है, और फिर हम उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो देखेंगे। Just open up my notes. All right. सो गाइज देखिए मेजर कॉजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या होगा, ओके, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ईच पॉइंट विथ यू। मैं अलग से ऐसा कुछ नोट्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बस अलग से एक एक पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी, ठीक है, फाइन, चलिए। So what is the first cause? The first cause is discovery of new land and trade routes. Okay. अब अगर आपको याद हो, remember मैंने आपको रेनेसां पढ़ाया था, and we talked about all the kind of scientific developments which have taken place regarding abacus, compass, etc. Right? And it was with Renaissance and Enlightenment that people now have this scientific inquiry that they had to make. And what did the scientific inquiry lead them to? The scientific inquiry led them to discovering new sea routes and new land routes to different parts of the world, isn't it? So you all know that it was Christopher Columbus who discovered the sea route to America. He did not discover America, America already tha wahan pe. He just discovered the sea route to America, and you all know that he was hell bent on coming to India. वो हिंदुस्तान ही आना चाहते थे, so much so कि वो उन्होंने अमेरिकन्स को भी इंडियंस जो है वो बुलाना शुरू कर दिया था। Anyway, so he had come here for what? So basically the whole idea was to find those countries or to find those areas where there is abundance of natural resources available, right? So this is one of the major causes of colonization, that they have started founding new land routes and trade routes, isn't it? Yes. So for example, जैसे अभी हमने वास्को डगामा का एग्जाम्पल दिया, सॉरी हमने क्रिस्टोफर कोलंबस का एग्जाम्पल दिया, which led to the colonization of Americas. Similarly, when Vasco da Gama discovered a sea route to India, it led to the colonization. So Portuguese did come, है ना?
सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में गए. We got independence, we got Goa as part of India in 1961, which is quite late, बहुत late है. But yes, they have colonized certain parts of India. So that is one such cause कि जब उन्होंने land routes और sea routes discover कर लिए थे, so now they have this whole, whole wide world open to them, which is full of resources. They can use it. Fine. Now, next is the economic considerations. All right. So, now why do you think these colonies have been established? Now, these colonies have been established only considering the economic considerations. Be it England, Spain, Portugal, France, they have all established their colonies in those areas which are rich in natural resources. ठीक है. और आप एक चीज नोटिस करना, ये हमेशा ही मोस्टली हर जगह ट्रेडर्स की तरह आए हैं, and they have just done what? They have just utilized the natural resources. That's it. That is what the whole idea is. कि क्या करना है हमें, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बस हमें उनको किसी तरीके से यूटिलाइज करना है. फाइन. सो फॉर एग्जांपल स्पेन आई थिंक वाज लुकिंग फॉर gold and silver, and they got this how? By conquering over the Aztecs and the Incas, all right, जो साउथ अमेरिका में थे. and the Britishers were looking for natural resources, raw material, तो इसीलिए वो इंडिया आए because they had abundance of natural resources, spices, indigo, cotton, textiles, silk, whatever they wanted they were able to find it in India, isn't it? So ये उनकी economic considerations थी, because understand guys कि वो सारे products हैं, these are the products which are in huge demand in their market. उनकी डिमांड, उनकी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है. कहाँ पे? उनके मार्केट्स में. उनके जो अपने मार्केट्स है वहां पे इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है. फाइन. सो व्हाट दे डू इज they basically wanted to get these products directly from the producers, all right, and they wanted to do what? और यही प्रोडक्ट्स ले जाकर के वो अपनी मार्केट में बेचते थे, and they were earning a lot of money from here. So economic considerations was one such thing. Fine. Okay. Now the next one that we have to focus on is called your religious motives. Now guys, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? अगर जब हम रेनेसां डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था Protestant Reformation. Okay. Now there were still many countries in Europe which were highly Catholic, है ना? Okay. वो क्या थे? वो बहुत ज्यादा कैथोलिक थे, हाईली कैथोलिक थे. So they did not want what? They did not want, वो हाईली कैथोलिक थे. So hence they did not want the Protestant reformers to grow. In fact उनका persecution होता था guys. और इस हद तक परसिक्यूशन होता था कि मैं आपको क्या बताऊं. इंग्लैंड की एक रानी है जिनको कि मेरी नाम था उनका. शी वाज द डॉटर ऑफ हेनरी द एथ, ट्यूडर डायनेस्टी. सो यू नो व्हाट, शी वाज नोन एज ब्लडी मैरी. व्हाई? बिकॉज शी हैज किल्ड सो मेनी प्रोटेस्टेंट्स. उनको जला देते थे जिंदा, या फिर उनको थोड़ा थोड़ा काट करके छोड़ दिया जाता था. दे वुड बी सो बेसिकली दे वुड बी टाइड, और उनको हल्का हल्का सा काट करके छोड़ देते थे. And these eagles and all these vultures would come and feed on the live people. Live लोगों के ऊपर feed करते थे. Can you imagine the pain? And there were different torture methods that she has used. I mean, आज भी अगर आप टावर ऑफ लंदन में जाओगे ना तो आपको प्रेजेंस जो है वो महसूस होगी. Those torture that they have gone through, these Protestants have gone through, you can feel it. आपको वो महसूस होगा. ठीक है. कभी मौका मिले तो जरूर जाना है. if you ever get a chance, do visit the Tower of London. Now, so you know what, for them they needed a safe zone. उनको किस चीज की जरूरत थी? उनको एक सेफ जोन की जरूरत थी, राइट? सो हाँ, सो फॉर देम अमेरिका वाज लाइक अ हेवन. उनके लिए अमेरिका क्या था? अमेरिका वाज अ हेवन where they could go, they could be free, they could practice their religion freely. फाइन. उनको कोई टेंशन नहीं थी वहां पे. There was no one to persecute them because that was the dominant religion
that would be followed there. Okay? So a major section which actually migrated to America was none other than the Puritans, or you can say the Protestant reformers, जिनको Catholics persecute कर रहे थे. ठीक है? Also, there was this need in Christianity to spread the message of Christ, and there was a need in Christianity to convert more and more people to Christianity. Okay? So, that is why the Catholic Church was very interested in sending missionaries to all of these locations so that the indigenous population could be converted. Okay? So, that is one thing. Okay? Alright. There were other factors as well. Fine. What other factors were there? So, यहाँ पे हम other factors करके इसको discuss करते हैं क्योंकि इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो आएंगी. Fine. So, what are the other factors which are there? Now, remember the enclosure movement has happened, right? And a lot of people have lost their farms. बहुत सारे लोगों की farms जो हैं वो जा चुके हैं. So, what do you think? What do you expect these people to do? Yes, they provided cheap labor for the industrial revolution. But if you all remember, getting a job in the industries was also not very easy. वहाँ पे jobs मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. So, in that situation, what would you do? How do you get jobs? So, these people were surplus labor available, and they were more than happy to go to a land go to America where abundance of land was available, and they could, cultivate those land. वो वहाँ पे lands को cultivate कर सकते हैं, ठीक है? Also, in the upper classes, there was a surplus of sons. What do you mean by that? So, generally these rich people had 2 to 3 sons, but England followed the notion of primogeniture. What is primogeniture? That only the adult son, जो सबसे eldest son है, सारी property जो है वो उसको ही मिलती है. All the property goes to whom? All the property goes to the eldest son only. No one else gets it. जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई property नहीं मिलती है. So these sons also were very interested in going where? These sons were also very interested in going to America, because at least there they would have some means of livelihood. They could convert all of these available lands, उसको convert कर सकते हैं, वहाँ पे cultivation कर सकते हैं, farmlands create कर सकते हैं, pastures create कर सकते हैं. So they had a wide opportunity open for them, right? So these are some of the causes of colonization. Okay. अब जो next चीज हम discuss करेंगे वो है आपका impact of colonization. What are the impacts of colonization? Okay. First of all, we have something called the Columbian Exchange. Okay, bhai. क्या है ये Columbian Exchange? What is this Columbian Exchange? So, Columbian Exchange is basically named after Christopher Columbus, alright, and it refers to the exchange of ideas, of diseases, of food, of culture, which happened between the new and the old world. Alright. So, ये किसके नाम पे है? Who is this person? So, the person name is Christopher Columbus. Alright. ठीक है? So, who's the person's name? The person is Christopher Columbus. Alright. And why is this exchange called the Christopher Exchange? Because he was the one who actually initiated this exchange. और इस exchange में क्या exchanges हो रहे हैं? So in this, there are a lot of exchanges of culture, of religion, of food, important diseases, resources, etc. तो ये जो भी exchanges थे, इसको क्या कहा गया था? इसको Columbian Exchange कहा गया था. Now understand guys कि इसमें बहुत सारी चीजें exchange हुई हैं. I think one of the worst exchanges were that of diseases. So you all know that Europeans were very used to living with animals, right? They have developed those antibodies which were required to fight the diseases which were there because of the cattle, right? But the natives had no immunity as such, ठीक है? Natives को इस तरह से कोई immunity जो है वो नहीं थी. So in that situation,
90 to 95% of the native population was wiped out. You know why? Not because of fighting, but because of diseases like smallpox, influenza, all of these diseases. Because natives के पास कोई भी एंटीबॉडी कह लो या कोई भी बैरियर इम्यूनिटी जो है वो नहीं थी इस चीज को लेके, बट यस द यूरोपियंस वर इम्यून टू इट. ठीक है, ऑलराइट. Yes, there was exchange of food as well. So I hope you remember आपने junior classes में पढ़ा होगा that you know lot of things that we eat today जिसकी हम जिसको कि अपना staple diet मानते हैं, like for example potato, tomatoes, chilies, maize, etc. They are not part of the Asian cuisine. They're not part of the Indian cuisine. They were actually introduced by the New World. They were actually introduced by Americas. है ना, वो यहाँ पे introduce किया गया था. It's just that हमारे पास क्योंकि हर तरह का मौसम है तो हम वो चीजें उगा सकते हैं, फाइन, बट अदरवाइज दीज आर नॉट नेटिव्स ऑफ इंडिया. इमेजिन आलू नॉट बीइंग अ नेटिव ऑफ इंडिया. हाउ कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट इट? बट यस, दिस इज हाउ इट वाज. Now, if you're getting confused between New World and Old World, so Old World was to refer to Asia, Africa, Europe, ठीक है, और जो New World है, it was to refer to the American continents, ठीक है. That is one major impact, fine. The other major impact is impetus to slave trade. Okay, भाई, इससे क्या मतलब है हमारा? What do we mean by giving impetus to slave trade? Let's understand this. Now you all remember that the colonizers or the colonies that they have established, what have they done here? यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? So mainly they want to establish plantations over here, right? वो plantations को establish करना चाहते हैं. Now who do you think will work in the plantations? Now Europeans actually found it very difficult to work in the plantations because the weather was actually very different. So for a very long time they depended on the labor of the natives, ठीक है. लेकिन नेटिव से उन्होंने इतना ज्यादा काम करवा लिया, ठीक है. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. बट नेटिव से उन्होंने इतना ज्यादा काम करवा लिया था द नेटिव स्टार्टेड डाइंग, राइट. दे डाइड ऑफ हंगर, स्टार्वेशन, ऑफ हार्ड वर्क because not they were not used to such lives. 90 to 95% of the native population has been wiped out because of this, all right. So now they needed to look somewhere else, and as a result, the natives give way, or the natives were replaced by African slaves. Yes. So there were these people who would go to Africa. They would capture slaves. All right, वहाँ से लोगों को पकड़ के लेके आते थे. They would be put in these slave ships. Fine. उनको slave ships में डाल कर ठूस कर लेकर के आया जाता था. Fine. And obviously you all know how the conditions of slaves have been throughout history. That ship ride itself, it was I think a 6-month or I don't exactly know कि कितना का ride था वो, but हाँ, the ship ride in itself was horrendous, guys. Horrendous, horrible, it is what it is. So you know what, generally in a capacity of suppose 500 people, मान लो 500 capacity की ship है, तो पता है उसमें कितने लोग ठूस के लाए जाते थे? Around 2000, right? Around 2000 people were, you know, bought in. There was no place, no separate place for urination or defecation, no. They would do it all there only, fine. People would fall ill, लोग बीमार पड़ जाते थे. बहुत सारे slaves जो हैं वो उसी journey में मर जाते थे. And you know what they would do? They would just throw their body into the seas. That is how the slaves were treated. And when they came here, it was a different world altogether, and it was a different kind of work altogether, and they were treated with such disrespect, I can't even tell you. अगर आपको कभी slavery के बारे में जानना है ना, तो एक movie है, बहुत अच्छी movie है, it's called 12 Years a Slave. You can watch that, and अगर आप movie नहीं देखना चाहते तो book भी पढ़ सकते हैं. book तो और भी ज़्यादा अच्छी है. और अगर कभी चाहो थोड़ा सा एक हल्का light reading करना चाहते हो regarding slavery, then you can also read The Help. That's also a very good book, a very good movie as well. Oscar winning movie है, तो आप ये movies देख सकते हो. It will help you understand some perspective regarding history and you know what, how the African Americans
have been treated. ठीक है? Okay. All right. So, so there would be these coastal tribes, all right, who would help the English people to capture slaves, all right, or in return they'd be getting gunpowder, gum, etc. बहुत सारी चीजें उनको मिल जाती थी. Fine, all right. So initially slave trade was started by Portugal. Portugal ने इसको शुरू किया था, but later on it was taken over by Europe. Later on it was taken over by England as well. ठीक है? तो ये जो स्लेव ट्रेड है ना, इसको ट्रायंगुलर ट्रेड और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है. व्हाई? Because basically you have three countries which are involved here. So you have Americans, Africans, and then you have the Europeans. All right. So what is happening here? The slaves are going from Africa to America. They are working there, and who's getting the profit of all the work that they're doing? The profit is being taken by the Europeans. Okay, fine. All right. So initially these trading activities were actually done by individuals, but later on we have formation of slave trade, what do you call it, companies जिन्होंने पूरा पूरा जो है ये दारोमदार जिसको हम कहते हैं, पूरी responsibility have been taken over by them. And can you imagine having a company which sells slaves? But yes, that was the norm. ठीक है? Okay. What is the next impact here? The next impact is mercantilism. Now, mercantilism can actually be seen as a cause and both a consequence of colonization, guys. ठीक है? Why a cause? Because see, mercantilism में होता क्या? What is the meaning of mercantilism? Mercantilism basically means you have a business, all right, and the business is what? कैसा business है आपका? So business basically states that you buy a certain product from somewhere and then you sell it off at higher prices to somewhere else. That is exactly what all of these companies were doing. They were buying products from India, all right, and they were selling it off in their home market at a higher rate, at a higher price. Okay. So yes, ये cause भी है because this is why we have to have colonization, and it is also a consequence. एक बहुत major consequence भी है ये, because it is because of colonization that mercantilism is going to continue, है ना? Otherwise continue कर ही नहीं पाता. ठीक है? All right. So these countries, Spain, Portugal, France, England, they actually boosted this policy of mercantilism by capturing all the colonies, by establishing all the colonies, by subjugating them to such an extent. उनके natural resources को exploit कर रहे थे, ठीक है? They started importing and exporting all sorts of products, जैसे कि spices हैं, cotton, sugar, etc. Alright. So आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि mercantilism जो है वो it's a cause also and it's a consequence also, because mercantilism would not have continued if there was no colonization. ठीक है? So that is there. Alright. यहाँ पे आप examples दे सकते हैं that how England got spices, indigo, etc. from India, how Spain got gold and silver from the Aztecs and Incas. Fine. And lastly, I think one of the main impact was diseases, and diseases जैसे कि मैंने आपको बताया, diseases and population loss. guys देखो ये बहुत major impact है, ठीक है? What do you mean by this? Remember, I just told you that Europeans have been living with cattle, for a very long time, and hence they are used to it. उनको आदत है. They have developed immunity against all the diseases which the cattle can actually carry, right? So, अब यहाँ पे क्या हुआ है? Yes, they have that immunity with them. But when they go to someone else's land, do you think the natives have this immunity? No. And as a result, they were caught with different diseases, influenza, tuberculosis, cholera, whatnot. Then there was smallpox also, measles, etc. 90 to 95% of the native population was finished just because of this. All right. Okay. Now,
I think another impact was spread of Christianity. तो आई डोंट अग्री विद दिस इम्पैक्ट, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस अग्री करते हैं, तो ठीक है, कर लेते हैं हम। So देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन देयर वाज spread of Christianity, ठीक है, and along with Christianity came a lot of modern ideas. So it made the people think about the religious setup, about the religious ideas as well, and people started thinking on modern lines. I think India can be a good example of this, right? That when Britishers came to India, the religious aspect of India was riddled with all kinds of social evils, right? Sati Pratha, child marriage, no women's education, widow remarriage nahi tha. But and then uh, the the educated classes of India, they got influenced by the European ideas. Unko influence hua, they studied the European ideas, they got influenced by it and hence started introducing reforms in their own countries. Sati was banned in 1829, widow remarriage was allowed in 1856. So all this helped in the ideas of modernity to come to various colonies. Okay? Alright. And as far as the indigenous population of America and Australia is concerned, they were following their own religion, they had their own traditional ideas, ठीक है, उनकी अपनी traditional ideas थी और कुछ ऐसे ideas थी जो actually काफी orthodox थी, fine. So like for example, the Aztecs would carry out human sacrifices to please God and for better fertility, etc. So all those rituals was sort of given up because of the coming in of the Europeans. I would not say because of coming in of Christianity, but yes, because of Europeans and the modern ideas that they have brought about. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलोनाइजेशन वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। हमने कॉजेस, सॉरी, हमने डेफिनेशन, हमने इम्पैक्ट देख लिया है, ठीक है, हमने डेफिनेशन देख लिया है, हमने कॉजेस देख लिया, हमने इम्पैक्ट देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, मैं आपको क्या करवाऊंगी, इन टुमारोज क्लास आई एम गोइंग टू डू rise of nation states with you, so Germany, Italy, and then we will be focusing on the American Civil War as well, because this would result in America becoming a strong nation. ठीक है, तो हम इन चीजों पे नेक्स्ट क्लास फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो ओके गाइस, आई थिंक आई विल एंड द सेशन हियर। आई रियली होप कि आपको सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। कहीं भी कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, मुझे जरूर बताइएगा कि हमें ये चीज समझ में आई, नहीं आई, जो भी आपको लगता है। और हाँ गाइस, कुछ चीजें ना मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको पता होंगी, आपको याद होंगी, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट जस्ट इन केस आपको नहीं पता है, यू फील कि नहीं मैम हमें तो ये आइडिया है ही नहीं, हाउ डू वी solve this, हाउ डू वी लर्न दिस, बिकॉज वी हैवंट डन इट, हमारा बेसिक्स नहीं क्लियर है। सो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, मुझे जरूर बताइएगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। तो मैं क्या करूंगी, मैं वो बेसिक्स जो है वो भी साथ साथ लेके चलती रहूंगी, ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो भी बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, सो प्लीज डू लेट मी नो, मुझे जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, okay guys, so I think I'll end the session here. Thank you so much for joining me here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Till then, please take care. Thank you. Bye bye.